the downloads. So here I am going to save this file. Okay, downloads t1 html t1.html all files. और यहाँ पर हमने इसे सेव किया. Now we need to go to this folder. So this is our HTML file and we have to open it in browser. So open with, okay, got it. The first name, last name and marks. Under this first name we have different names of the student. Last name, under this we have last name of the student and marks column is having whatever the marks that we have filled. Now coming to this script, HTML script, see what we have used or what different subtags we have used. So TR, whenever you will work on any row, you will use respective TR. So here you can see highlighted line. Is it visible to you? So this TR हमने यहाँ पर start किया है and we have closed this first TR over here. It means we wanted to work for this particular row, first row, this one. Are you getting this? So this TR responsible to work over here. If we want to work for this next row, TR means row, table row. So this is applicable to this much space. This next TR is for this next row. Is it clear? Okay. So, okay, let us discuss whole thing for table row first. For table row first, what other sub tag we have used within this TR tag? We have used TH tag. TH started, TH close. TH stands for table head or table heading. हम लोगों को पता है जनरली व्हेन वी यूज टू क्रिएट टेबल हम लोग उसके टाइटल डिसाइड करते हैं हर कॉलम के लिए, ईच एंड एवरी कॉलम. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. TH and in between this first TH we have given first column's title and that title is first name. In similar way हमारे पास कोई दूसरा टाइटल है दूसरे कॉलम के लिए. Similarly we have third column title. So उसको हमने किस टैग में रखा है? TH, टेबल हेड. बिकॉज ऑफ दैट आप लोग अगर इसका इंप्रेशन देखोगे तो यू विल फील कि इट इज इन बोल्ड फॉर्मेट इफ वी कंपेयर इट विथ टेक्स्ट फ्रॉम द दैट रेस्पेक्टिव कॉलम. इज इट क्लियर? अगर मुझे और एक कॉलम चाहिए, व्हाट आई हैव टू डू? व्हाट आई हैव टू डू? I have simply to add one more this table head over here and provide the respective title. जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी दे दिया. Okay, now I will save it. मिला हमें टाइटल. एक टाइटल और ऐड हुआ, मीन्स एक कॉलम और ऐड हुआ यहाँ पर. बट उस रिस्पेक्टिव कॉलम के लिए we haven't filled the data. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रो. अब हमने बात करनी है इस रो की. सो वी नीड इंफॉर्मेशन फॉर दिस रो अगेन फॉर रेस्पेक्टिव कॉलम. तो देखो यहाँ पर क्या किया हमने, TR टेबल रो अगेन, क्योंकि हमने रो चेंज किया है. हम टेबल रो तब तक नया ऐड नहीं करेंगे जब तक हमें नेक्स्ट रो पे काम नहीं करना है. नाउ वी वांट टू वर्क फॉर नेक्स्ट रो. सो TR रो चेंज हो गया बट हमें काम करना है डेटा पे. सो टेबल डेटा अगेन. सो फर्स्ट कॉलम के अंडर जो डेटा हमें रखना है वो हम लोग रखेंगे टेबल डेटा में. सो फर्स्ट कॉलम के अंडर हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेम चाहिए. तो हमने फर्स्ट नेम लिखा यहाँ पर. हमने और एक कॉलम में हमारे पास, सॉरी उस रो में हमारे पास दूसरा कॉलम भी है. सो फॉर दैट रिस्पेक्टिव डेटा वी हैव एडेड जायसवाल.
लास्ट नेम, तीसरा कॉलम भी हमारे पास है, दैट इज मार्क्स, सो वी हैव एडेड मार्क्स ऑल्सो। ओके, अब हमने एक चौथा कॉलम ऐड किया था। फॉर दैट सपोज आई वांटेड टू इंसर्ट अगेन डेटा, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू, ये जो पेयर है पूरा का पूरा मुझे रिपीट करना होगा, बट विथ रिस्पेक्टिव डेटा, जो डेटा मुझे यहाँ रखना है वो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब हमने इसे सेव किया, अब हमने इसे रिफ्रेश किया, मिला हमें डेटा, जो नया कॉलम ऐड किया था उस कॉलम के लिए रिस्पेक्टिव डेटा मिला, यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट, हम लोगों ने नेक्स्ट जो रो होगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे। फिर से यहाँ पर हमें नेक्स्ट रो के लिए जो रिस्पेक्टिव कॉलम ऐड किया था उसके लिए डेटा ऐड करना पड़ेगा। इन सिमिलरली जितने हमारे पास टेबल रोज होंगे विथ डेटा, उतने सारे टेबल रोज ऐड करने होंगे विथ रिस्पेक्टिव दैट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर फिर से एक नया रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड किसे बोला जाता है? फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट नेम जेम्स, लास्ट नेम विलियम, एंड इसके मार्क्स कितने हैं? 80। सो दिस कंप्लीट रो इज कॉल्ड वन रिकॉर्ड। अब मैंने फिर से एक रिकॉर्ड एंटर करना है, तो नेम इज अमोल, देन सरनेम इज, कोई नाम सरनेम बताओ मुझे। हाँ, बोरुडे, बोरुडे, ठीक है। मार्क्स नहीं 100 ही कर देते हैं ना, ठीक है। और मान लो हमें नेक्स्ट कॉलम भी चाहिए, सो हियर हम लोगों ने और कुछ ऐड किया है। फाइन, मैंने सेव किया एंड अगेन आई एम, so this row we have added. Are you getting this view or not? आपको डिस्प्ले मिल रहा है सबको? Okay, so last row we have added first name as an Amol, last name as an Borude, marks 100, and some another title I have given to this column which is not meaningful one, but just for the information or just for the example I have given this. And under this column we have tried to insert respective data for first record and last record. Rest of the records are having no data for this particular column. So this type of design may be asked in your final examination to prepare table like this. Is it clear? Yes. So that way we have to create it. Next is, any doubt? No doubt. Now look at this. Suppose you want table with border. Okay. So what change we have mentioned here? देखो टेबल एक एट्रीब्यूट लिया हमने बॉर्डर नाम का, उसे वैल्यू पास किया है 1। ऑलवेज वी विल पास वैल्यू इन डबल कोट। फिर से हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे, अब हमें मिला टेबल विथ बॉर्डर। Let us try this another example. सेव एज, क्या करना है हमें? t2.html, हमारा लोकेशन सेम है, सेव किया हमने,
यहाँ पर कोड एंड लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। यहाँ पर क्या चेंज करना होगा, मुझे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो T2. So we got this result after executing this file. So let us see what is happening here in this code. हमने टाइटल दिया है यहाँ पर टेबल, so we got table title here. Follow my mouse pointer. Don't look here and there. Don't discuss anything. मिला आपको? Yes. Then हमने यहाँ पर एक नया चीज ट्राई किया है, स्टाइल. We will discuss when we will start our discussion on CSS. तो तब हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड दिस कोड लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. यहाँ पर हमने एक नया टैग लिया है स्टाइल विच इज कमिंग फ्रॉम CSS, HTML, CSS. और यहाँ पर हमने लिया है ये टेबल. दिस इज नथिंग बट यू आर दिस एलिमेंट. अब इस एलिमेंट को हमने क्या करना है, हमने कोई स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन पास करनी है सो दैट वी कैन चेंज इट्स स्टाइल, नेचुरल स्टाइल. ओके, सो हमने क्या किया है, उस टेबल के लिए बॉर्डर, यहाँ पर सिंपल एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज हमने यूज किया है. एट्रीब्यूट हमने यूज किया है बॉर्डर कोलैप्स, और वैल्यू दिया हमने उसे कोलैप्स. मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगा जिसमें आपको मिलेगा कितने सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल है और कितनी उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है. ओके, don't do your other businesses, concentrate on this class only. Now we have used again another attribute width, and we have passed 100% value, 100 and percentage, this value to this particular attribute. Again, what is this th and td? Table head and table data. So for this respective elements also we want to change its natural style to this particular given style. So border हमने यहाँ पर दिया है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर. 2 पिक्सल वाला उसका बॉर्डर होना चाहिए साइज, और उसका शेड क्या होना चाहिए, सॉलिड ग्रीन. पैडिंग हमने यहाँ पर यूज किया है 15 पिक्सल. So this styling information we have applied to th and td commonly, and this styling information we have applied to this element table. अब हम लोग आते हैं नीचे in the body tag. ये हेड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. This styling information we have kept in body head tag. Now within this body tag, see what we have done. Table as it is, हमारा जो टेबल था, एलिमेंट जो टेबल एलिमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है. नाउ फर्स्ट रो, टेबल रो, टेबल हेड, फर्स्ट टेबल हेड, this one, this is your second table head, this is your third table head. I am talking about this one, one header and one header. So this is first header, second header and third header, or title that you have given to your that column. Next हमारा फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया है. फॉर एग्जांपल वी डोंट वांट एनी अदर हेडर फॉर द टाइटल और एनी न्यू कॉलम. अब हमारा नेक्स्ट रो का फर्स्ट डेटा, सो टीडी, उसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड किया है. हमने सेकंड कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन ऐड किया है, हमने थर्ड कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन ऐड किया है. So this will come here. First column, this information. For second column, this information. For third column, this information. Okay, and similar way we have inserted rest of the records into this particular column. So look at here, this table impression of the style given to this table means under this element table, whatever element, sub element will occur or we will insert, so those element will get by default this styling information. Okay, तो उसका स्टाइल क्या आने वाला है, बॉर्डर कोलैप्स, और विड्थ क्या आने वाली है 100%. नाउ व्हाट इज बॉर्डर कोलैप्स?
You remember your last example, this one. तो यहाँ पर देखो ये जो है ना डबल बॉर्डर दिख रहा है हमें हर कॉलम के लिए. Yes, we are getting double border for each and every column, and now here we are having single border. So it is because of that property collapse. Again, if we compare this output with this new output, we are getting this information in this space only, this much space. Whatever the content that we have added, and those content defaultly required space is okay for that much space those contents are occupying or taking place. Okay, within that area that information is displaying. Now here we are getting 100% space row wise if you look at. So it is because of this property called width equals to 100%. अगर मैं यहाँ पर 50 करता हूं तो it will display on 50% of your page size. हुआ 50%. अब टेबल कितना डिस्प्ले हुआ, कितने एरिया में डिस्प्ले हुआ, within 50%. So this way it is working. In similar way हमने टेबल हेड और टेबल डेटा के लिए बॉर्डर क्या रखा है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन एंड पैडिंग 15 पिक्सल. तो पैडिंग का भी हम लोगों ने साइज कम कर दिया है और फिक्स किया है, और बॉर्डर का साइज भी हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है. सो दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग द डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ टेबल एलिमेंट एंड सब एलिमेंट्स ऑफ द टेबल, दैट इज टेबल हेड एंड टेबल डेटा. So give me 5 minutes. I will be back here again.